All right, so let's start with our weekly webinar, Market Masterclass with Religare. So most of you know, for those who are joining us for the first time, I'll brief how exactly this webinar flows. So first we talk about the market performance during the week, followed by the focus on key indices, both Nifty and the banking index, and sectors to focus on, stocks to watch. Everything will cover in next 20 minutes, followed by the Q&A session. सो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीकली वेबिनार में। और इस वेबिनार में शुरुआत हम करेंगे मार्केट की इस वीक की परफॉर्मेंस, और ज़्यादा टाइम हम स्पेंड करेंगे कि नेक्स्ट वीक क्या एंटिसिपेटेड है, कौन से की लेवल्स को ध्यान रखना है, कौन से सेक्टर्स पे फोकस करना है, कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बातें करेंगे। जब सेशन खत्म होगा उसके बाद एक क्विक फीडबैक पोल होगा, उसके बाद Q&A सेशन। तो कोई भी सवाल होगा आपका वेबिनार से रिलेटेड, डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। किसी सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, वी कैन डेफिनेटली डिस्कस। एक क्वेश्चन मार्क करके बटन होगा आपकी स्क्रीन पे, Q&A लिखा होगा, उसको आप दबा के अपने सवाल को लिखकर पूछ सकते हैं। तो होप we are ready for the webinar. So without much delay, quick disclaimer that it's not a trading or investment recommendation. So before you make any decision based on the information shared, please check with the financial advisor. तो जो भी हम बात करने वाले हैं वो कोई ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी डिसीजन इस इंफॉर्मेशन के बेस पे लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर आप बात करें। So this is how the market ended, flattish close for both Nifty and Sensex, and it was more of a tussle rather. It's not reflecting the right picture. Means flat. There was almost like swings on both sides. Bulls tried to reclaim this 25,800, 900 levels. Bears tried to push the index below 25,600 mark, but they couldn't. In the interim, sector-specific move was evident, wherein metal, IT, banking, financials, they did exceptionally well, while realty, pharma, auto, media, and FMCG, they remained lackluster. Among the top 5 gainers, you can see that 2 of the names from the IT basket, TechM and Infosys. Then we have Tata Steel. From the metal space, ONGC and SBI also took part in the list. On the losing side, of where we saw profit-taking Cipla, from the pharma space, L&T, Maruti, Sun Pharma, and Geo. So 2 names from the pharma basket, and which is certainly not a very good sign, because we were seeing a very decisive possibility of reversal in pharma index after almost 1.5 years of consolidation. It turned out to be a failure this time. So obviously we'll discuss that in detail. So as of now, देखिए ये जो पिक्चर है आपकी, इंडेक्स क्या बता रहा है कि ऑलमोस्ट आप जहां लास्ट वीक थे फ्राइडे के दिन, इस वीक भी इसी वहीं पे ही आप क्लोज हो गए। तो कुछ चेंज नहीं हुआ, बट चेंज कहाँ पे था? चेंज ये था टसल जो हो रहा था कि ऊपर और नीचे दोनों साइड पे ही मार्केट कोशिश किया जाने का, बट वो हो नहीं पाया, और इवेंचुअली हमने फ्लैटिश क्लोज देखा। बट इन सब के बीच में स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मूव अच्छा रहा। यहाँ पे कि मेटल, बैंकिंग और फाइनेंशियल्स इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। वहीं पे आपको प्रॉफिट टेकिंग देखी बाकी सारे सेक्टर्स में। गेनर साइड पे आपको आईटी, काउंटर्स, इन्फोसिस के रिजल्ट्स जिस तरीके से आए, उसके बाद से जब हमने देखा कि आज के दिन जो ट्रैक्शन था उसने काफी हद तक हेल्प किया आईटी में तेजी का। तो जो टॉप 5 गेनर्स आपके निफ्टी 50 में, उसमें से 2 नाम आपके आईटी वाले रहे। और लूजिंग साइड पे आपके फार्मा वाले काउंटर्स में 2 टॉप लूजर्स में सिप्ला एंड सन फार्मा अलोंगसाइड विद एल&टी, मारुति एंड जियो फाइनेंस। तो ये पूरे वीक क्या सिचुएशन रही उसका एक इंडिकेशन। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें, मिड कैप स्मॉल कैप की, तो वहां पे भी पिक्चर कुछ खास अच्छी नहीं थी। ऐसे ही कुछ टसल चलते हुए ही देखा हमने। और स्मॉल कैप, जैसे कि हम सबको पहले ही बताया कि वी आर अंडर परफॉर्मिंग व्हेन इट कम्स टू द स्मॉल कैप स्पेस, सो that has been continuing since long. Now let's focus on what we should do next week when it comes to the Nifty index. Nifty में क्या करना चाहिए, किस तरीके से पोजीशनिंग है, क्या एंटिसिपेटेड है। So this is the daily graph, and last week we've discussed about that post this breach of this rising channel and the previous swing low.
that is going to act as a strong resistance. Means 25 850 880 का जो जोन था वो ब्रेक होना लास्ट वीक इस चैनल के साथ, जो ये आप देख पा रहे हैं, ये चैनल है राइट, जिसके अंदर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। चैनल का मतलब कैसे कि दो लोस और दो हाईज को हमने मिलाया, एक चैनल बना दिया। तो इसी के अंदर ट्रेड कर रहा था। जब ट्रेडिंग चैनल को ब्रेक किया उसने तो मोमेंटम लूज किया और फिर अब 100 EMA के पास ये घूम रहा है। So how we are positioned? So it's been almost like 5 days of tussle, 4 days of tussle around this area, right? Breach that mark, one day, but we could manage to hold, 25,600 for the rest of the session. So 25,600, this line, this 100 EMA, that is where all the action is taking place. As long as we are holding this mark, there will be a possibility that Nifty might make an attempt of a rebound again towards 25,900, 26,000 level, and that would negate the bearishness that we are seeing in the market right now. In simple words, to bulls to regain control, they need to cross this barrier of 26,000 mark. Then eventually 26,200, 300 means again will be like retesting the highs areas. What if we fail to hold 25,600, then 25,200? Earlier we were thinking that this previous swing low, but I feel that in case if we break after 4-5 days, I doubt that we are going to sustain this previous swing low also. There could be a day of a breather around 25,300, but eventually this 25,200, which also coincides very close to the 200 days of exponential moving average around 25,150, that will be the next major support for the market. तो देखिए, जो मैंने कहा उसको एक सिंपल तरीके से अगर हम समझें कि 25,600 के पास ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइन, सारा काम यहाँ पे हो रहा है। इसको ब्रेक करने का, उसको होल्ड करने का, जो हमने पहले भी बात की। तो ये अगर ब्रेक हो गया तो क्या होगा? ये ब्रेक हो गया तो फिर ये जो लाल लाइन पीछे से आ रही है एक सपोर्ट की, जहां से ब्रेकआउट आया था निफ्टी में, उस लेवल को अगर एक्सटेंड करते हैं तो 25,200 के पास आता है। और जो आपकी ये दूसरी लाइन है जो कि स्ट्रेट नहीं है, ऊपर नीचे हो रही है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज 200 दिन की, ये करीब 25,150 के पास आती है। तो इस जोन के पास आके मार्केट आपको रुकता हुआ शायद नजर आएगा अगर 25,600 को हम ब्रेक करते हैं तो। अभी तक टोन नेगेटिव साइड पे है। क्यों? क्योंकि जितनी बार भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, राइट? हमने चैनल को भी ब्रेक कर दिया है, तो अभी तक टोन नेगेटिव है। जैसे कि लास्ट वीक भी हमने बात की थी, यही चीज की बात की थी कि 25,900 26,000 के पास जाएंगे, विल फेस सेलिंग प्रेशर, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग। गुड पार्ट इज वी आर स्टिल होल्डिंग 25,600। जब तक 25,600 है तब तक बुल्स के लिए एक होप है। उसको ब्रेक हो जाने के बाद होप करने की कोई लॉजिक नहीं होगी, बिकॉज कंफर्मेशन आ जाएगा कि मार्केट थोड़ा सा और करेक्शन के लिए तैयार है। क्लियर है? नाउ let's see why we are holding 25,600. So banking is one of the key reasons that why we are holding 25,600 in the Nifty index. And on Monday, not only one but two heavyweights, HDFC and ICICI, they'll be announcing their numbers tomorrow, means on Saturday, and we'll see the reaction on Monday. Alongside with the banking heavyweights, Reliance Industries, Reliance will be announcing its number today. So three heavyweights, Reliance, HDFC Bank, ICICI Bank. We are going to react to those numbers in early trade on Monday. Banking is holding strong, right? Because this is what we were discussing last week also, that there's a divergence. When we call divergence is basically one force is trying to pull the market this way, the other is trying to pull the market the other way. And as of now, the both are stuck. Means bulls are holding strong when it comes to the banking index. It holds considerable weight in the Nifty 50. That is the reason why 25,600 को we can defend so far. Monday ko we'll see the reaction to HDFC and ICICI Bank ka number, and then it will be clear ki whether this strength is here to stay. Are we inching towards this area, this red line towards 26?
sorry, 61,200. Prior to that, this immediate resistance 60,500 is going to be the immediate resistance, and then eventually around 61,200, 300 is something the banking index can test. Right? In case if we break this zone 59,200, this area, then the previous swing low or the ultimate swing low, which banking index has been defending for quite some time, 58,700, which also now coincides with the trend line support, is going to be the support area. So for banking index, 59,200 is going to be the key support. So broadly, this 500-point range, 58,700 to 59,200. And like, in case if we manage to surpass this 61,200, then probably we are set for the next leg of the up move in banking. तो देखिए बैंकिंग का पिक्चर बहुत अलग है टू व्हाट वी आर सीइंग इन निफ्टी. यहाँ पे रिकॉर्ड हाई के पास हम ट्रेड कर रहे हैं और इसकी स्ट्रेंथ हेल्प कर रही है कहीं ना कहीं निफ्टी में जो डैमेज है उसको कैप करने की. बट एचडीएफसी आईसीआईसीआई इन दोनों की वेटेज काफी ज्यादा है. टोटल 12 स्टॉक्स हैं आपके बैंकिंग इंडेक्स में, तो इनकी वेटेज काफी ज्यादा है. तो ये जब दोनों का ही रिजल्ट का रिएक्शन होगा तो काफी हद तक इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए कि क्या डायरेक्शन मिल जाएगा मंडे को या नहीं. साथ में रिलायंस है ही, राइट. तो इस सबको देखते हुए 52,200, 58,700 ये बैंड आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट वीक के लिए. जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है बैंकिंग. हो सकता है रिएक्शन आ जाए, लेट्स से अगर रिजल्ट्स में कोई भी थोड़ा सा 19-20 हुआ तो बैंकिंग इंडेक्स शायद नीचे आए, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आए. बट इंडेक्स में कभी खराबी कब आएगी? जब 58,700 के नीचे जाएगा तब बैंकिंग इंडेक्स में खराबी आएगी. अदरवाइज ये कंपैरेटिवली बेटर बना रहेगा, राइट. इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी रहेगी. पीएसयू बैंक्स ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं इस पूरी रैली में और वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, राइट. सो इन बैंकिंग पीएसयूज इज समथिंग दैट यू शुड बी फोकसिंग लार्जली. Of course, they are high beta counters, so they see the reactions also sharp reactions on the downside also. But in case if you are okay maintaining strict stop losses, you know how to disciplinarily manage those positions, definitely you should prefer PSU banks. So this is about both Nifty और banking index के 58,700 जब तक होल्डर है तब तक बैंकिंग में भी आपको तेजी की. तो निफ्टी में जहां पे हम मंदी की बात करें कि 25,600 ब्रेक हुआ तो और मंदी, यहाँ पे 58,700 जब तक होल्डर है तब तक ठीक है सब कुछ. अब पीएसयूज को देखना है. Let's talk about stocks now. So basically we are in the earning season, we all know that, and earning में one thing which is normal is volatility काफी ज्यादा होती है. एक तो आपकी मार्केट की वॉलेटिलिटी जो कि ड्यू टू ग्लोबल फैक्टर्स चल रही है, डोमेस्टिक फैक्टर्स चल रही है. अर्निंग्स increases that intensity. So the focus should be more on stocks which are already out from this uncertainty of earnings. So HCL Tech from the IT basket, HCL Tech which is outperforming price wise within the large cap IT names and looks set for the gradual recovery towards its record high. So as you can see that post this consolidation range breakout, it inched higher initially, followed by the retest and then eventually a new record high and then again a base formation. And this area is a kind of a base that we are forming on the weekly charts, and we are set for breaking this zone, so which could propel the stock towards the record highs. So while the other IT counters are still struggling to manage or hold within the large cap space, it is actually outperforming by big margins. So we expect this outperformance to further continue. So in case if you are planning any position in IT space, you can consider HCL Tech basis their relative strength, right? तो सॉरी, देखिए जो हम आईटी पैक की बात की हमने कि आईटी पैक में स्ट्रेंथ दिख रही है और ऐसा नहीं है कि ये आज इन्फोसिस की वजह से मूव आया है तो हम इस चीज को कह रहे हैं. हमने पहले भी ये बात की थी कि बैंकिंग में तेजी है बट आईटी स्टेबल है और
स्टेबिलिटी के साथ जब आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं तो फिर एक चांस बनता है कि आप रिकवरी दिखाएं। तो वही चीज अभी देखने को मिल रही है, जैसे कि इन्फोसिस में रिजल्ट के बाद जिस तरीके से रिएक्शन देखने को मिला। बट इस पूरे स्पेस में जो कि बड़े 4 बड़े नाम आपके HCL टेक, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL टेक की आउट परफॉर्मेंस बहुत क्लियर है। मीन्स बहुत कम स्टॉक हैं जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस के इतने नजदीक होंगे आईटी बास्केट में। उनमें से लार्ज कैप नेम में से ये एक नाम है। और जो ये प्रीवियस जहां से ये गिरावट आई थी उस लेवल को ये क्रॉस करने के लिए तैयार है इस पॉज के बाद, राइट? तो HCL टेक इज समथिंग दैट यू कैन फोकस ऑन इन द लार्ज कैप आईटी नेम्स। PSU banks, like what we've discussed during the presentation, that अगर बैंकिंग को प्रेफर करना है तो PSU बैंक को जरूर देखिएगा। और PSU बैंक में PNB is one candidate wherein we are seeing very steady, gradual, but at the same time very rewarding trend. Suppose this trend reversal, right? We are seeing this stock inching gradually higher, forming a base, then making a move. Similar base was formed here, and this week it was a breakout, right? So we are gradually uh, likely first it's going to be this area around 140. It might take a breather, when eventually it can surpass this level too, right? तो देखिए PSU बैंक जैसे हमने बात की थी प्रेजेंटेशन में, तो PNB जो कि एक ब्रेकआउट यहाँ पे आया था, एक ट्रेंड जो डिक्लाइनिंग साइड पे था, उसके बाद एक बेस बनाना, फिर ऊपर जाना, फिर बेस बनाना, फिर ऊपर, ये इस वीक ब्रेकआउट हो गया। तो ये कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर्स हैं, बट आपको डिसिप्लिन रह के इनमें ट्रेड करना है, कंसिडरिंग कि मार्केट का टेक्सचर उतना स्ट्रांग नहीं है। मीन्स 25 से 600 के नीचे निफ्टी में प्रेशर आएगा तो ऑटोमेटिकली फिर ये दोबारा से रेंज बाउंड हो सकते हैं, राइट? बट यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस रहेगी, ये इंडिकेशन काफी स्ट्रांग है कि PSU बैंक्स कंपैरेटिवली निफ्टी में आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म करेंगे, इसकी इंडिकेशन काफी स्ट्रांग है। सो PSU इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली फोकस। Lastly on the list, VBL. Time-wise corrective trend means we all know the kind of outperformance that the stock usually experience. But after this, record high, it's been almost like significant period that the stock was witnessing correction. Now it's more of time-wise correction. That we are trading in this triangle pattern and making attempts. Still, we are making attempts of a reversal. Means last week it was an attempt, and this week too we made it. Though it's not very decisive because volumes are not very conducive, but still there's a possibility that we may see a trend reversal soon in Varun beverages, and that could be rewarding because we have very less stocks left wherein we see strength and the risk reward is also favorable, right? So this is one stock which you can keep on your radar for the coming weeks. Here we didn't mention about any stock which look negative to us, because the moment we're going to break 25,600, there'll be a whole lot of stocks, and it will be very difficult to identify a stock or a sector where we see strength. So that's why we have recommended or we have shared these stocks where we see strength in comparison to the weakness. On the weakness side, ABB, Siemens, these are some of the names where we see weakness, by the way. तो VBL, वरुण बेवरेजेस एक करेक्शन, एक करेक्टिव टोन में था, और अब इंडिकेशन आ रहा है कि यहाँ से एक रिकवरी, एक अच्छी रिबाउंड हो सकता है। तो इसको भी आप फोकस कर सकते हैं अलॉन्ग साइड विद PNB and HCL Tech. Right, so this is all from the presentation. Just to brief you all about what we have discussed. So Nifty 25,600 make a break. Last week भी यही बात की थी हमने, 25,600 ब्रेक होगा तो कोई प्रॉफिट टेकिंग बढ़ जाएगी। होल्ड करते हैं तो फिर उम्मीद रहेगी कि एक रिकवरी आए, बट रिकवरी कब लगेगी? स्ट्रेंथ है रिकवरी में जबकि 26,000 के ऊपर सस्टेन करेंगे, उससे पहले रिकवरी में स्ट्रेंथ नहीं मानना है। और नीचे पे 25,600 के नीचे फिर आपका 200, 150 जो मेजर सपोर्ट है वो रहेगा। इन सबके बीच में बैंकिंग में स्ट्रेंथ बनी हुई है, 58,700 जब तक होल्ड हो रहा है बैंकिंग में, ब्रॉडली ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। और ऊपर पे करीब 61,200, ये आपके बड़े टारगेट होंगे या पहला टारगेट होगा वीकली के हिसाब से।
स्टॉक स्पेसिफिक हमने बात की कि आईटी में जो रिजल्ट आ चुके हैं, एचसीएल टेक काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, पीएसयू बैंक्स में पीएनबी जहां पे की स्ट्रेंथ दिख रही है, और बीपीएल जहां पे की फ्रेश पोटेंशियल है रिवर्सल का, राइट? सो this is all from the presentation. Now let's do a quick feedback poll and then we can start with the Q&A. So can we have the feedback poll, because I can't see that on my screen? Meenakshi? Yeah. So please fill in your feedback and then you can start posting your questions using that Q&A button. आप अपना फीडबैक देने के बाद अपना सवाल लिखकर पूछ सकते हैं, जो Q&A बटन आपकी स्क्रीन पे है उसको यूज करके। जिन जिन का हो गया फीडबैक, दे कैन स्टार्ट पोस्टिंग देयर क्वेश्चंस। कोई भी सवाल है आप लिखकर पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन मार्क करके बटन है आपकी स्क्रीन पे, उसको आपको प्रेस करना है, आपके पास लिखने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। So we are almost done with the feedbacks. So let's end this. Now move to the Q&A. Okay, so we have a couple of queries, stock specific queries. In case if you have any sector specific queries, koi sector specific query hai, first let's address that and then obviously we'll talk about stock specific queries also. कोई पहले सेक्टर स्पेसिफिक कोई क्वेरी है जो जिसको सबका ही बेनिफिट हो, मींस अगर हम सेक्टर की बात करते हैं तो किसको अवॉइड करना है, किसको रखना है, ज्यादातर हमने बात की ही है। सो मोर ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज। ओके, yeah, so what about small cap and mid cap? So basically, see, what we are seeing at present is mid cap definitely has upper hand, when it comes to the overall trend. Because in mid cap index, we recently made a new record high in line with the Nifty index, while small cap is still reeling under pressure. So be selective within the small cap space if you are planning any fresh position. In case if you have any existing position, do not add to your loss making position is something that we recommend. For small cap, when we are going to see the reversal, Nifty small cap index 18,000 level is something that you might note it down. Once we cross this, then probably we are set for further up move towards 19,000. Downside 16,800 will be the key support area to watch out for in the Nifty small cap. Mid cap is comparatively better. Definitely you can look for positioning there. Okay, Ashish, he has this question that all PSU sectors are rising, right time to entry or wait for the correction? Not all. See, I make it very clear that railways, defense, very selectively they are participating, not outrightly we are seeing the bullishness. So select PSUs from energy basket, yes. PSUs from the banking basket, yes. Rest, we still need to be cautious. We cannot go overboard, or especially for railway counters, wherein every time we see an up move, it not only retrace that move, but also push the stock towards a newer low, right? So the counter move is much sharper. So avoid railway stocks if the view is short term until we see some sign of reversal, decisive price action, which we had seen in past, but it couldn't sustain, right? So PSU banks and select energy counters, something that you should be focusing on. View on metals. So metals still, Pradesh, looks positive to us. Metal as a pack, we all know the kind of outperformance that we are seeing in bullions, means gold and silver, and now the base metal, they are also buzzing in trade. So that's the reason why the Nifty Metal Index is also trading at the record highs. But now, after this phenomenal surge, steel counters, which were slightly on the back foot during this rally,
if you see that the other counters, be it Hind copper, Hind zinc for silver, and you know other counters like National Aluminium, uh, which have done exceptionally well. Then BEDL due to demerger and other factors. Tata Steel, SAIL, Jindal Steel, JSW Steel, they are still offering decent upside from current levels. So within the metal space, though the tone is positive, but one needs to be selective. And if you are chasing momentum, let's say with Hind zinc and Hind copper, uh, do maintain stop losses or keep your positions completely intraday. तो देखिए जैसे हमने मेटल सेक्टर की बात की ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए. आई एम समराइजिंग दिस इन हिंदी आल्सो दैट इट रीचेस टू ऑल द ऑडियंस की यहाँ पे तेजी है, उसमें कोई डाउट नहीं है. इंडेक्स आपका रिकॉर्ड हाई पे है, स्टॉक्स आपके रिकॉर्ड हाई पे है. बट जब आप इस तरीके की तेजी में चेस कर रहे होते हैं ना, और मेटल ऐसा सेक्टर है कि जब ये गिरता है तो ये उतनी ही स्पीड से गिरता भी है, तब फिर केवल क्वेरी करते हम रह जाएंगे कि अब इसमें क्या करें. तो बेटर यही है कि पहले ही हम तैयार रहें. कैसे तैयार रहेंगे कि अगर मैं 5 रुपए के टारगेट के लिए अगर मैं देख रहा हूँ तो 2 रुपए, 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस मेरा जब ही कटे मेरे को निकल जाना है. ये चीज पहले ही क्लियर होनी चाहिए. खासतौर से जहां पे आप मोमेंटम चेस कर रहे हैं, जैसे कि हिंद जिंक, हिंद कॉपर, नेशनल एल्युमिनियम, बीईडीएल, इस तरीके के काउंटर्स जहां पे मूव नहीं आई है, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पे अभी भी बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं आपको. सो होप इट आंसर्स योर क्वेरी. ओके, सो Taushik ji, we have like separate decks for commodities, and if you are associated with us, the team shares the entire strategies around crude, base metal, bullions. So obviously you can discuss with your respective branch or your business partner team. They'll help you out. Okay. Subhashji, MF is something that is not in the purview of this webinar. So in case if you are associated with us, you can get in touch with the branch or your business partner, and they'll help you out to identify the right set of opportunities in the mutual fund business. Okay. Now let's take a couple of stock specific queries. Okay, so BSC, BSC, Sujit, you have this question. So it looks positive, it looks firm. So within the capital market basket, BSC, Angel One, Anand Rathi, Wealth, MCX, they all are holding strong. Right. So here, BSC, and in fact, there's news around an upcoming IPO from the NSE also. So that may continue to keep this momentum alive in BSC in coming days. Even if you have a long-term view, you can definitely stay put. But you should know that in case if you are investing it for long-term, what is your key thesis? So as of now, the capital market penetration has increased substantially, and but at the same time, there will be hiccups, interim challenges every now and then in terms of market correction or change in technology and things like that, change in expiries. So make your rationale very clear that why you are investing. Just anticipating that I'll be eyeing this kind of return. So without having any logic behind that, it would be difficult task to hold that stock during the bad times. So hope it answers your query on BSC. Next is Chabil Das ji on Nestle and Central Bank. So let's check Nestle first.
So FMCG still we are not very confident about the outperformance of the sectors for the obvious reason because ITC holds a considerable weight and it's still lagging behind. But Nestle, Britannia, Marico, Godrej Consumers, these are some of the names which are definitely holding strong. So Nestle looks okay. 1250, strong base, 1350 zone where we have immediate resistance. The moment we surpass this, we are set for the uh, fresh momentum. So yes, it looks okay. You can continue to stay put. For central bank is making an attempt, but it's an underperformer within the PSU space. So mind you, when I say PSU bank, it doesn't mean that any bank, uh, you know, qualifies for a buying. Stocks which are trading in sync with the PSU banking index means if the PSU banking index is at the record high, the stocks should also be at the record high or at least the 52-week high, not at the 52-week low, right? So UCO Bank, Central Bank, IOB, these stock is something that should refrain. PNB, SBI, Canara Bank, Bank of Baroda, Indian Bank, these are the stock is something that you should be focusing on, right? So Bank of Maharashtra is good. Bank of Maharashtra is definitely falls in the performance category. So you can continue to focus on that. Tawfiq ji, we are not recommending any level to buy or sell any stock. It's basically I'm giving you the overview how we are seeing things. It's completely up to you whether you want to take position and for Tata Motors or any other stock. Tata Motors passenger vehicle is something which is negative in trend, so you should avoid. At the same time, Tata Motor commercial vehicle (TMCV) that looks strong. So here 420 is the immediate support and 450 is the immediate resistance. So if we cross resistance, then probably 470, 475 is something that the stock might test. So 420 is the immediate base right now. Okay, amusement park like Vandrila. Okay, so let's see where we stand. So, Santosh ji, we have seen sharp correction, means it has almost halved in this last, you know, 2.5 years. So, still we are not seeing any sign of reversal. Good part is that at least the volume has reduced. So, sellers are not very active, and in fact, there were a recovery attempt in the past. So for any confirmation, we should wait and let this stock surpass this 540, 550 levels for any bounce towards 590 and 600. But it's not going to reverse the trend. For any trend reversal, we need a close above 650. So as of now, if you are accumulating for the short term or medium term, uh, this immediate swing low is your immediate stop 500, and in case if it fails to hold, then probably it may inch further lower towards 440, 450 also. So one should not continue with a long position if the view is short term below 500 mark. Okay, so that answers your query. Okay. What was your first query? I need to go back and see. Shreyansh, can you please confirm this name of the stock? Okay, in the meanwhile, I'll just move to the other question. AU Bank. AU Bank is definitely a outperformer, means a steady uptrend, a bit volatile now after this move. 960 is the immediate support from where we saw the rebound also. So in case if you have any existing position, you can continue to stay put with that as a stop loss. Upside is open since we are at the record high, so keep on drilling your stop losses on rise. Let's say we move towards 1050, 1080, you can move your stock to 1000 plus levels and gradually, like you can continue to do so.
Okay. Thank you. Yes, Subhashi on Kalyan Jewelers. Kalyan Jewelers. Kalyan Jewelers, in fact, uh, it's a failed breakout attempt. Breakout now turning into a breakdown. So the way we have ended this week, 445, that's the immediate support. In case if it fails, then probably we are set for the next leg of down move. So 445 should be a stop in case if you have any existing position. Otherwise, 430, 420, something that the stock might test or maybe lower. So hope it answers your query. ITC, okay, ITC was your query. Yeah, so uh, see, the way we ended this week is despite oversold position, we are not seeing any respite. Means ITC में जो decline आ रहा है, इतना pressure झेलने के बाद भी कोई भी बाउंस नहीं दिख रहा है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, राइट? अब होगा क्या कि 338-40 जहां पे कि काफी टाइम स्पेंड किया, अब वो एक रेजिस्टेंस का रेक्ट करेगा और नीचे पे अभी ऐसा कोई मुझे लेवल नजर नहीं आ रहा है जहां पे कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डेरिवेटिव साइड पे भी OI 330 पे था, जहां की आज हम उसके नीचे बंद हुए हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे अभी मार्केट के अगेंस्ट जाके कुछ भी पोजीशन बनाना इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। सो इंस्टेड if somebody is feels stuck, then they can consider writing calls if you understand how the F&O market works. So like 350, 360 call, uh, so that you can reduce your buying price is what you can consider in case if somebody is having derivative. In cash market, you can continue to stay put. But again, since there's no sign of recovery and there's no major support also, which we can see prior to this 300 mark. So this may result in further deterioration in the trend. Okay, so next we have Rohit's question on Jindal Stainless. Long-term view. So in case, Rohit, if you're associated with us, you can write to us. You can get in touch with the branch or the business partner. They'll provide you the email IDs through which you can discuss. Otherwise, what we have shared about metal counter as a whole, especially the steel counters, they looks comparatively okay, and that's whole true for JSL also. But in case if you have any specific queries to the long term, you can definitely write to us. Okay. Thank you. Okay. We have answered most of the queries, I guess. Yeah. So with this, we have answered almost all the queries. So thank you everyone for participating. Next week, 23rd. Yes. So we'll connect again. And till then, take care.